guys, welcome to the next part of the video, next part of the triangle. In yesterday's video already we have seen the introduction to the triangles and we have seen some theorems, some properties of the triangles, that is by using SSS property rule. So we have solved few problems on it. Now in today's video we will be starting with ASA congruency rule. So ASA congruency rule is nothing but the theorem number 1 in the NCERT books. Let us see what the theorem states. The theorem states that the two triangles are congruent if two angles and the included side of one triangle are equal to the two angles and the included side of the other triangle. It's very confusing to read like this. So let us understand representatively. So this is the two triangles which we have ABC and PQR. तो ASA rule का मतलब क्या है? Angle side angle. So this angle B is equals to angle Q, angle C is equals to angle R. So what is given? Angle B is equals to angle Q and angle C is equals to angle R. These two angles are equal and the included side. ये दोनों angles के बीच की included side कौन सी है? BC. ये दोनों included side है QR. So in between these two angles, the sides are also equal in the triangle. So BC is equals to QR. So can we say we have three things which are equal in two triangles? The triangles are congruent. And we can say that two angles are equal and one side are equal. Two angles are equal and one side are equal. That is why the name is given as angle side angle congruency rule. So that's what we tell in short ASA rule. Again you will read the definition. Two triangles are congruent. These two triangles will be congruent if two angles and the included side. Two angles and the included side of one triangle are equal to the two angles and the included side of the other triangle. I hope now the statement of the theorem must be clear. So this is theorem 7.1 in the NCERT textbook, whereas the proof for this theorem has been deleted for 2021 batch. So here we will not be doing the proof of this theorem कि का proof हम लोग इधर नहीं करेंगे. So we will be seeing that कि ASA rule से ये congruent है because these two angles are equal and the side between them is also equal. So what we will be doing now, we will be solving some few sums related to ASA theorem and we will come to know how we can prove the triangles congruent and how we can prove the respective sides, corresponding angles and the corresponding sides equal if the triangles are congruent. Let's see. Now let's have a look on a sum over here. Line segment AB is parallel to another line segment CD. This AB is parallel to CD. It is given in the question. So what is given in the question? First we need to write that AB is parallel to CD is given in the question. Now O is the midpoint of AD. AD का O क्या है? Midpoint है. अगर midpoint है तो it is going to divide it into two equal halves. So I can say OA is equals to DO. AO is equals to DO. Because it is a midpoint which is given in the question. Now what we need to prove? O is the midpoint of AD. Show that what we need to prove? We need to prove triangle AOB is congruent to triangle DOC. And the second proof, this is the first proof which we need to do, and the second proof is O is the midpoint of BC. O BC का midpoint है, मतलब मेरे को prove करना है कि BO is equals to CO. BO is equals to CO के equal proof करना है because it will be the midpoint when and only when these two sides will be equal. So let's start with the proof. Proof हम लोग करेंगे by stating that these two triangles are congruent. How we can make them congruent? Let's see. In triangle AOB and triangle AOD. Sorry, in triangle DOC. Can we say that these two angles are equal? Angle 1 and angle 2 is equal. Vertically opposite angle. Angle 1 is equals to angle 2. Vertically opposite angle. And the second thing which we can say is side AO is equals to OD. Side AO is equals to OD, which is given in the question. This thing is given in the question. And the third thing which is hint is given like AB is parallel to CD. अगर ये दोनों line parallel है, can I say that AD is a transversal acting between these two parallel lines? And if AD is acting as a transversal, I can say these two angles are equal. Alternate interior angles. And alternate interior angles, let it be angle 3 and angle 4. So we can tell that angle 3 is equals to angle 4 by alternate interior angles. Alternate interior angles. Why this is? Because AB is parallel to CD. So हमारे पास क्या मिला? This
टू एंगल के बीच की एक साइड मिल गई, टू एंगल के बीच की एक साइड मिल गई. कैन वी से दीज टू ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट बाय ASA रूल? Yes, definitely these two triangles are congruent. Triangle AOB is congruent to triangle DOC by ASA rule. ये रूल के हिसाब से ये congruent है. So I can say that if these two triangles are congruent, so we can say like that कि ये CO will be equal to OB. Because OB ये वाले triangle का part है and CO ये वाले triangle का part है, and if the triangles are congruent, so we can say each side and each angle of both the triangles will be equal. So by CPCT, corresponding parts of congruent triangle, by CPCT we can prove that BO is equals to CO by CPCT. So at the last we can say that therefore O is the midpoint of line BC. That's what asked in the question. हमको प्रूव करना था O is the midpoint of BC and we have proved by proving BO is equals to CO, thus by CPCT if the triangles are congruent. So this is the way how we can solve such types of problems by using ASA rules. Now let's have a look on this question. ABCD is a quadrilateral in which AD is equals to BC. What is given in the question? Given question is AD is equals to BC. This side is equals to this side. It is given in the question. And angle DAB is equals to angle CBA. It is given in the question. Angle DAB, this whole angle is equals to this whole angle. It is given in the question. What we need to prove in the question? So this is the way how we will write the sum. Given to proof and then the proof. What we need to prove? Triangle ABD congruent to triangle BAC. We need to prove BD is equals to AC and angle ABD is equals to angle BAC. ये तीन चीजें हमको प्रूफ करनी है. तो सबसे पहली चीज क्या प्रूफ करनी है? ट्राइंगल ABD. Which is the triangle ABD? ABD. This triangle. This triangle is congruent to triangle BAC. BAC means this triangle. Fine. ये दोनों ही ट्राइंगल हमको क्या प्रूफ करने हैं कि कॉन्ग्रुएंट है. Let's see how we can prove this. So proof is in triangle ABD and triangle BAC. Can we say that in both the triangle AD is equals to BC which is given in the question? तो हमारी पहली चीज तो आ गई AD is equals to BC. This is given in the question. Fine. Now the second thing which we know is this angle is equals to this angle which is also given in the question. Angle ABD is equals to angle BAC. This is also given in the question. तो एक साइड एक एंगल हमारे पास इक्वल प्रूफ हो गया. नाउ व्हाट वी कैन से इज we need to prove that the two triangles are congruent. How we can prove that the two triangles are congruent? Can you see AB is common between them? If you take this side, this triangle, and you take this triangle, you can say AB is common, and you can say AB here and AB here. So AB is equals to AB, which is कॉमन बिटवीन देम. तीन चीजें कॉमन आ गई मतलब हम बोल सकते हैं कि हमारा ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है. सो ट्राइंगल ABD इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल BAC is congruent to triangle BAC. By which rule? We have two sides and one angle. SAS rule. Side angle side rule. So we have SAS rule. So what we can say, these two triangles are congruent. अगर ये दोनों triangle congruent है तो इनके respective corresponding sides भी equal होने चाहिए. BD is equals to AC. Where is BD? This is BD and this is AC. Can we say BD is equals to AC by CPCT? Yes. BD is equals to AC by CPCT. Corresponding parts of congruent triangle. So these two parts will be again equal. Now we need to prove angle ABD. ABD means which angle? This angle. This angle is equals to angle BAC. BAC means this angle. Can we prove that? अगर ये वाला ट्राइंगल ले लूं तो इसका एंगल एंड ये वाले ट्राइंगल का ये एंगल सेम है. तो एंगल ABD is equals to angle BAC again by CPCT.
So just by proving these two triangles congruent, we can prove by CPCT these two this side and this angle is also congruent, because the corresponding parts of the congruent triangles are equal. So I hope the whole sum must be clear to you, and we will be seeing further few more sums regarding these rules. Now let's have a look on this question. Line L is the bisector of an angle A and B in any point on L. Angle A का bisector क्या है? This line L is a bisector of this angle. So I can say angle 1 and angle 2, and in the given condition I can mention that angle 1 is equals to angle 2 because it is a bisector. Line L is a bisector for angle A, and it is mentioned that and B is any point on L. B is any point on the line L. BP and PQ are perpendiculars from B. It is mentioned that BQ and BP are the perpendiculars from P. So angle Q is equals to angle P is equals to 90 degree. It is also given in the question because they are perpendiculars from B to the arms of angle A. Show that triangle APB is congruent to triangle AQB. We need to prove these two triangles are congruent, and BP. So what we need to prove? We need to prove that triangle APB is congruent to triangle AQB. And second, we need to prove BP is equals to BQ. So BP is equals to BQ means these two sides will be equal. We need to prove. So if the two triangles are congruent, तो ये दोनों sides तो automatically equal हो जाएंगी by CPCT. So just ये triangle equivalent proof करा तो दोनों sides भी equal हो गई. कितना simple सम है? BP is equals to BQ. तो आपको मेहनत किस पे करनी है? ये दोनों ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने में मेहनत करनी है, which is also very simple. Let's have a proof here. So what we will do in triangle APB and triangle AQB, दोनों ट्राइंगल में देखते हैं क्या कॉमन है. Can we say AB and AB will be equal because AB is common between the two triangles? So AB is equals to AB, which is common between the two triangles. And we know this angle is 90, this angle is 90. Angle Q is equals to angle P is equals to 90 degree, which is given in the question. And one more thing, it is given in the question, angle 1B, angle 2K equal है. So angle 1 is equals to angle 2, which is given in the question. We have three things equal. We can say the triangles are congruent. The triangle APB is congruent to triangle AQB. By which rule? By ASA rule. क्योंकि दो एंगल और एक साइड इक्वल है. इवन यू कैन राइट एंगल साइड, एंगल साइड भी लिख सकते हो आप, AAS भी लिख सकते हो. फाइन. These two angles, angle and this sides are common. So once these two angles, these two triangles are congruent, we can say that these two sides will be equal by CPCT. So our next proof is also done, which is nothing but BP is equals to BQ by CPCT. So I hope the triangles, the questions in triangles must be easy. बहुत सारे लोगों को ट्राइंगल्स चैप्टर हार्ड जाता है, बट लेकिन हम सिस्टमैटिकली अगर उसको पढ़ेंगे तो बहुत इजी चैप्टर है एंड बहुत ही आसानी से सॉल्व हो जाता है. आप लोग अभी देख ही रहे होंगे कि कितने आसानी से हम लोगों ने 3-4 सम सॉल्व किए अभी तक, विच इज़ वेरी शॉर्ट ऑल्सो. एंड कोई दिक्कत नहीं होती है, जस्ट वी नीड टू गो बाय द रूल्स विच वी हैव ऑलरेडी स्टडीड इन और द थियरम्स विच वी हैव स्टडीड इन द चैप्टर. So I hope you must be enjoying it. Let's see few more sums. Now let's have a look on this sum. AC is equals to AE. It is given in the question. जो given है वो चीज हम लोग पहले लिख लेते हैं. AC AE के equal दिया हुआ है. That is nothing but this side AC is equals to AE. I have marked with the two lines over here. Now AB is equals to BD. AD के equal दिया है. These two sides are equal and angle BAD is equals to angle EAC के equal दिया है. Angle BAD, this angle is equals to this angle. It is given in the question. What we need to show is, what we need to prove in the question is BC is equals to DE के equal proof करना है. What we need to prove? BC is equals to DE. अच्छा, तो BC DE के equal proof करना है, तो ऐसे कौन से दो ट्राइंगल लें जिसमें कि BC भी आ रहा है and DC भी आ रहा है, DE भी आ रहा है. So the two triangles we need to suggest, we need to take those two triangles which contain BC as a side and DE as a side. So let us see, can we tell that triangle ABC, ये पूरा triangle and the triangle ADE includes BC and DE.
काम बन जाएगा। अगर ये दोनों ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दिया तो बाय CPCT वी कैन से दैट BC is equals to D. Let's have a look. So let's see how the proof will be. In triangle, तो हमको वो ट्राइंगल्स चूज करने होते हैं जो कि हमको प्रूफ करना है। तो हमारी सिचुएशंस पैदा कहाँ से होती हैं? जो कि चीजें हमको प्रूफ करनी है उधर से आती हैं सब। सो sorry, not ABD, ABC and triangle ADE. So let's have a look over here how we can solve it. दिया हुआ क्वेश्चन में क्या है? AB किसके इक्वल है? AD के इक्वल है। So we can write AB is equals to AD, which is already given in the question. And one more thing is given in the question is angle BAD is equals to angle EAC. Angle BAD is equals to angle EAC दिया है। But हमारे पास अगर मैं इक्वल करना चाहूं तो ये पूरा ट्राइंगल शुड बी इक्वल टू दिस पूरा ट्राइंगल, करेक्ट? क्या आप लोग देख पा रहे हैं इन दोनों के बीच में ये कॉमन पार्ट है, सेम ट्राइंगल कॉमन आ रहा है, विच इज द ट्राइंगल DAC. DAC is a triangle. If I add DAC on both the side, it won't change anything. So BAD plus angle DAC is equals to angle EAC plus angle DAC. दोनों ही जगह पे मैंने DAC ऐड करा है, मेरी इक्वेशन को कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है। सो BAD के साथ ये छोटा पोर्शन मिला दिया तो क्या बन जाएगा? BAC बन जाएगा, एंगल BAC बन जाएगा। एंड सिमिलरली इफ आई मिक्स with this portion I will get EAD, angle EAD. So this angle is also equal. And the last thing which is given in the question is AB is equal to AD. AB is equals to AD, which is given in the question. So I can say that the three things are already equal in the question. This angle, this side and this side. So side, angle, side. सो SAS प्रॉपर्टी से हम लोग बोल सकते हैं कि ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है। यस, ट्राइंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ADE बाय SAS रूल। By SAS rule. So by SAS rule we can say that these two triangles are congruent, and the Kani stops over here. If two triangles are equal we can say that BC is equals to D by CPCT. By CPCT. देखा कितना इजी है ट्राइंगल्स को सॉल्व करना। फिगर देखने से डर लगता है, द बेसिक जो डर है ना चीजों का वो फिगर देखने से लगता है, अरे बाप रे क्या प्रूफ करना है, कॉन्ग्रुएंसी, अरे कुछ नहीं है, बहुत इजी है। सो नाउ यू कैन सी हाउ वी हैव प्रूफ, एंड इतना सा प्रूफ है, 4 लाइन का प्रूफ है, कुछ करना भी नहीं है ज्यादा। सो आई होप द क्वेश्चन मस्ट बी क्लियर। Now the last question I will be solving here, which is an important question from the NCERT book. Let's have a look. Let's have a look to the last sum for this video, and it is a very important sum regarding to the NCERT textbook. बहुत ही फेवरेट रहा है सभी स्कूल्स का और बहुत बार पूछा गया एग्जाम में। 4 मार्क के लिए ये सम आता है, which is really important. बट अगर ध्यान से समझ लेंगे तो बहुत ईजी सम है, कुछ भी नहीं करना है, स्टेप बाय स्टेप चीजें सॉल्व करती जानी है, अपने आप सारे के सारे प्रूफ्स आपको निकल के आ जाएंगे। दिखने में लंबा चौड़ा लग रहा होगा सम, बट लेकिन वैसा कुछ भी नहीं है, बस 4 प्रूफ करने हैं, विच इज रियली इजी। देखते हैं कि कैसे करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल, इन राइट ट्राइंगल ABC, दिस इज अ राइट ट्राइंगल ABC, कैसे कैसे फिगर बनी वो भी मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ। M is the midpoint of the hypotenuse. This M is the midpoint of hypotenuse. So first of all, can we write in the given section that अगर M midpoint है AB का तो M डिवाइड कर रहा है AB को 2 इक्वल भाग में, तो AM will be equal to BM, which will be given in the question. It is given, it is a midpoint of the hypotenuse AB. Now it is given that C is joined to M and produce to point D. And produce to point D मतलब कि extend करना, produce मतलब extend करना, हम lines and angles में सीख चुके हैं। Such that DM is equals to CM. DM is equals to CM. It is again given in the question. तो DM CM के equal है, and this is equals to this. Now point D is joined to point B. Point D is joined to point B. Show that triangle AMC. I am not writing here कि क्या प्रूफ करना है, जो प्रूफ करना है वो यही 4 चीजें हैं जो प्रूफ करना है। You can write it by your own and leaving it blank. So what is the proof? We will start with the proof. What we need to prove is triangle AMC, that is AMC. This triangle should be
कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल BMD मतलब ये ट्राइंगल, ये दोनों ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है। तो मैं ये दोनों ट्राइंगल ले लेती हूँ, इन ट्राइंगल AMC एंड ट्राइंगल BMD, ठीक है, दोनों ट्राइंगल। कैन वी से दैट दिस एंगल विल बी इक्वल टू दिस एंगल, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल है, सो एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 2, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। ये वाली साइड के इक्वल है, विच इज ऑलरेडी गिवन इन द क्वेश्चन, DM इज इक्वल्स टू MC। सो DM इज इक्वल्स टू गिवन MCM, which is given in the question. It is given in the question. Now what else is given in the question? AM is equals to BM. So AM is equals to BM. It is also given in the question. Can we say that side property से ये दोनों triangle congruent prove कर दिए हमने? So we can say that triangle AMC is congruent to triangle BMD by SAS rule. SAS रूल के तहत हमने ये दोनों ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दिया। अगर ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है मतलब उनके करस्पॉन्डिंग साइड्स भी इक्वल होंगे। क्या मैं लिख सकती हूँ BD AC के इक्वल होगा, BD AC के इक्वल होगा, एंड मुझे अभी ये देखना है कि मैं इसमें से और क्या क्या इक्वल निकालूं। तो मेरे को सेकंड चीज क्या प्रूफ करनी है, एंगल DBC मतलब ये वाला एंगल मुझे 90 डिग्री प्रूफ करना है। मैं 90 डिग्री कब प्रूफ कर पाऊंगी, मेरे को ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया है ये 90 है, बिकॉज व्हाई इट इज 90, बिकॉज राइट एंगल ट्राइंगल है ABC, राइट एंगल ट्राइंगल है ABC, राइट एंगल एट C पर राइट एंगल है, सो राइट एंगल है C पर, तो यहाँ पे तो ऑलरेडी 90 डिग्री मेरे को क्वेश्चन में दिया गया है, तो मेरे को प्रूफ करना है ये वाला एंगल भी मेरा 90 डिग्री है। हाउ कैन आई प्रूफ, अगर यदि ये दोनों लाइन पैरेलल हो जाएं, ये दोनों लाइन पैरेलल हो गई तो कैन आई से द सम ऑन द इंटीरियर साइड्स ऑफ द सेम ट्रांसवर्सल आर सप्लीमेंट्री होंगे, तो मतलब ये 90 180 माइनस 90 विल गिव मी 90, मिलेगा 90। बट उससे पहले मुझे क्या प्रूफ करना पड़ेगा कि ये दोनों लाइन कैसी हैं, पैरेलल हैं। ये क्वेश्चन में दिया नहीं है कि ये दोनों लाइन पैरेलल हैं। हाउ वी कैन प्रूव दीज टू लाइन्स आर पैरेलल, अगर मैंने ये प्रूफ कर दिया ये एंगल और ये एंगल इक्वल है, because this is nothing but the alternate interior angles. Angle 3 and angle 4 are alternate interior angles between the lines AC and BD. And ये क्या एक्ट कर रहा है, ट्रांसवर्सल एक्ट कर रहा है उसके बीच का। तो ये दोनों लाइंस अगर ये दोनों एंगल्स इक्वल हैं, प्रूफ कर सकते हैं। ये दोनों ट्राइंगल अगर यदि इक्वल हैं तो ये एंगल भी तो इक्वल होंगे। So we can write by CPCT angle 3 is equals to angle 4 by CPCT. ये दोनों एंगल्स इक्वल हैं। इसके बाद एक लाइन लिखेंगे, since these two angles are alternate interior angles, AC will be parallel to BD. AC will be parallel to BD. Since angle 3 is equals to angle 4, since angle 3 and angle 4 are alternate interior angle, therefore AC will be parallel to BD. अगर AC BD के parallel हो गया, now we can say by the property which we have already learned the theorem in chapter lines and angles, these two, the sum on the same side of the transversal is 180 degree. If the sum on the same side of the transversal is 180 degree, I can say angle C plus angle D is equals to 180 degree. Reason क्या लिखेंगे ब्रैकेट में, sum on the same side of the transversal is supplementary. So एंगल C हमें ऑलरेडी मालूम है 90 डिग्री है, तो एंगल B कितना आ जाएगा, 180 माइनस 90 विल गिव यू 90। यही तो प्रूफ करना था सेकंड वाला, फर्स्ट हो गया सेकंड हो गया। सो एंगल DBC इज राइट एंगल ट्राइंगल, 90 आया मतलब इट इज अ राइट एंगल ट्राइंगल। आई होप बोथ द प्रूफ्स मस्ट बी क्लियर। तो पहला आया, उसकी कॉन्ग्रुएंसी यूज करके हमने दूसरे को कैसे प्रूफ किया। अभी थर्ड बोला है प्रूफ करना है DBC इज कॉन्ग्रुएंट टू ACB। लेट्स सी क्या प्रूफ करना है, इन ट्राइंगल DBC एंड ट्राइंगल ACB कौन कौन से दो ट्राइंगल है देख लेते हैं। DBC ये वाला ट्राइंगल, दिस ट्राइंगल एंड दिस ट्राइंगल, दैट इज ACB। तो दोनों ही ट्राइंगल में क्या मैं ये बोल सकती हूँ BC कॉमन है, BC is common with both the things, both the triangles. So this is common side. This is common side.
कैन वी से DB इज इक्वल्स टू AC, क्योंकि हमने ये दोनों ट्राइंगल ऑलरेडी कॉन्ग्रुएंट प्रूव करे थे, एनसीपीसीटी से लिखा था कि ये दोनों साइड भी इक्वल हैं. सो BD इज इक्वल्स टू AC, प्रूव्ड अर्लियर, ठीक है. ये दोनों साइड भी इक्वल हो गई. अब क्या इक्वल कर सकते हैं? क्या मैं बोल सकती हूँ एंगल B एंगल C के इक्वल है विच इज 90 डिग्री. एंगल B एंगल C के इक्वल है विच इज 90 डिग्री. तीन चीजें इक्वल प्रूफ हो गई. मतलब कि ट्राइंगल कैसे हो गए? ट्राइंगल आर कॉन्ग्रुएंट. ट्राइंगल आर कॉन्ग्रुएंट. इफ द ट्राइंगल आर कॉन्ग्रुएंट वी कैन से दैट, and by which rule they are congruent? SAS rule, side angle side. So by SAS rule they are congruent. If they are congruent, can I say that these two triangles are congruent? CD will be equal to AB by CBD CD. CD AB के equal होगा by CPCT होगा. Now they have asked in the fourth, this thing is CM is equals to half of AB. CM is equals to half of AB पूछा है. दोनों के साइड हाफ ऑफ मल्टीप्लाई कर देते हैं, देखते हैं क्या आएगा. हाफ ऑफ CD is equals to half of AB. अच्छा, मेरे को क्वेश्चन में ऑलरेडी मेंशन किया है कि CD में DM और MC इक्वल है, तो मैं क्या बोल सकती हूँ? M is a midpoint of CD and DM. midpoint of CD, पूरी लाइन का M कैसा हो गया? मिड पॉइंट हो गया. अगर मिड पॉइंट हो गया तो कैन आई राइट CD की जगह पे मैं क्या ट्वाइस ऑफ CM लिख सकती हूँ? हाफ इंटू ट्वाइस ऑफ CM is equals to half of AB. This one 2 and 2 will get cancelled out, so we can say that CM is equals to half of AB. This is nothing but the fourth proof which was being asked in the question. So I hope the question was simple. Just हमको अर्लियर क्वेश्चन में दो प्रूफ पूछे जा रहे थे, यहाँ पे हमको 4 इकट्ठे प्रूफ पूछे हैं, 2 ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने को पूछे हैं. That's why the sum is little lengthy, but if you go with procedures, it will be very easy, and it is a favorite sum from all the schools which is being asked for the 4 marks. So बहुत अच्छा सम है, बिल्कुल भी हार्ड नहीं है. अगर आपने एक बार अपने आप कर लिया तो बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आने वाली है, बट इम्पॉर्टेंट है. That's why I'm repeatedly telling you it is important. I hope you must have learned all the basic things of the triangles, whatever we have covered till now. All the theorems must be clear. If you like the content, please like, share and subscribe even with your friends. Thank you. Bye bye. We will meet in the next video.